हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ आवर एपिसोड द मिस्ट्री ऑफ मोशन। इमेजिन करो तुम एक कार में हो। कार इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। ड्राइवर एक्सेलरेटर प्रेस करता है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट फिजिक्स में सिर्फ ये जानना इनफ नहीं है कि वेलोसिटी चेंज हुई। हमें ये भी जानना है कि कितनी क्विकली चेंज हुई, और इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज सिंपली द चेंज इन वेलोसिटी divided by the time interval, that is a is equal to v minus u by t, where u is equal to initial velocity, v is equal to final velocity, and t is the time interval. The SI unit is meter per second square. Now let's take an example. सपोज कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होकर 20 मीटर पर सेकंड हो गई और इसी चेंज में 5 सेकंड्स लगे। चेंज इन वेलोसिटी दैट इज 20 minus 10 is equal to 10 meter per second, and time is 5 seconds. So a is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। बट एक्सेलरेशन का मतलब स्पीडिंग अप नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर कार ब्रेक लगाती है तो 20, 15, 10, 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, फिर भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, बस अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। So acceleration is equal to rate of change of velocity. Velocity increases, acceleration in the direction of velocity. Velocity decreases, acceleration opposite to velocity. Velocity changes direction, acceleration can occur even if speed stays constant. That is, acceleration tells us how quickly velocity changes. So अगर velocity हर second same amount से change हो, then we have something very special, that is constant acceleration, and that's where our equations of motion begin. अब एक रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। इमेजिन करो एक बस हाईवे पर ट्रेवल कर रही है। इनिशियली बस की वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर एक्सेलरेटर प्रेस करता है। 10 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर। सो बस इज स्पीडिंग अप, लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप। फिजिक्स में एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। सो 36 किलोमीटर पर आवर बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड, and 54 kilometer per hours become 15 मीटर पर सेकंड। अब फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज in the previous slide we see that a is equal to v minus u by t, where v is the final velocity, u is the initial velocity, and t is the time interval. So we put v is equal to 15, u is equal to 10, and t is equal to 10 seconds as given in the question. So it becomes 0.5 meter per second square. Since it is positive, so we put the plus sign. So acceleration becomes 0.5 meter per second square in the positive direction. Positive sign tells us acceleration velocity की डायरेक्शन में है, because बस की velocity increase हो रही है। अब ड्राइवर ब्रेक लगाता है। So ड्राइवर इमीडिएटली ब्रेक प्रेस करता है तो बस की वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर से जीरो हो जाती है इन जस्ट 5 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी वाज 15 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, दैट इज u is equal to 15 meter per second and v is equal to 0 meter per second. So
acceleration becomes v minus u by t, that is 0 minus 15 by 5. It becomes minus 3 meter per second square. So acceleration becomes 3 meter per second square in the नेगेटिव डायरेक्शन. अब ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है. बस की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. In the first case, when the driver pressed the accelerator, u is equal to 10 meter per second, v is equal to 15 meter per second, and acceleration is 0.5 meter per second square in the positive direction. But when the driver applies the brake, u is equal to 15 meter per second, v is equal to 0, time is equal to 5 seconds, and acceleration is minus 3 meter per second square in the negative direction. So acceleration can be positive or negative depending on the direction of the velocity change. As we learned earlier, when an object is dropped from a height, it takes a straight vertical path downwards before touching the ground. While coming down, the velocity of the object increases. At different instants, find the magnitude of the average acceleration of the object in every successive interval of a second. Is the average acceleration constant across all intervals? What is the direction of this average acceleration? Yes, the average acceleration is constant and its value is a is equal to 9.8 meter per second square. It remains constant across all the successive 1 second intervals. What is its direction? The object is moving downwards and its velocity is increasing downwards. Therefore, the acceleration is also downward in the direction of motion. This is the acceleration due to gravity denoted by g. The velocities shown at successive seconds are as follows. That is, at 0 seconds, velocity is 0 meter per second. At 1 second, velocity is 9.8 meter per second. At 2 seconds, velocity is 19.6 meter per second. At 3 seconds, velocity is 29.4 meter per second. At 4 seconds, velocity is 39.2 meter per second. So, we will calculate the average acceleration from 0 second to 1 second. Average acceleration is equal to v minus u by t, that is 9.8 minus 0 upon 1 minus 0 is equal to 9.8 meter per second square. Average acceleration from 1 second to 2 second is equal to 19.6 minus 9.8 is equal to 9.8 meter per second square. Average acceleration from 2 seconds to 3 seconds. 29.4 minus 19.6, 3 minus 2 is equal to 9.8 meter per second square. Average acceleration from 3 seconds to 4 seconds. 39.2 minus 29.4 upon 4 minus 3 is equal to 9.8 meter per second square. So, the average acceleration is constant. Velocity changes every second but acceleration remains constant. अगर velocity changes, acceleration exists. But can we actually see motion and acceleration?
Yes, we can turn motion into something visual through graphs, and that's where motion starts telling us its story. What if we could actually watch a graph being born from motion? Now let's make it faster. The graph isn't just showing where the object is, its slope tells us how quickly its position is changing. Like, share, and subscribe to AK Physics 47.